सीनियर्स, अनीशा तू भी बता देना इनको थोड़ा. गो बैक टू द मेमोरी लाइन, गो बैक टू दोज डेज ऑफ योर कैट प्रिपरेशन. एक एक लाइन बोल देना. आई गिव यू कंटेक्स्ट. DILR होता है, एऑन ऐसे होते हैं, पढ़ाई कर लो भाई. या कुछ कुछ मेरी तारीफ करें, मेरी भी तारीफ कर देना. 999888 जो तुम्हें मोटिवेट किया. और लेट द आई एम रिजेक्ट यू तो अभी बोल नहीं सकते, बिकॉज तुम्हें लोगों ने रिजेक्ट करना ही करना है. अभी वेट, कुछ तो रिजेक्ट हो ही जाओगे तुम. तो बट या बट जेन्युइनली गिव देम सम टिप्स. बट गो बैक द मेमोरी लाइन. डोंट जस्ट टॉक अबाउट मॉक्स ओनली. ठीक है, मॉक्स देने बहुत ज़रूरी है. बट या वन लाइन. अनीशा यू स्टार्ट यार, तू सबसे सीनियर है यहाँ पे. ऐसे मत बोलो. ऑन engineering background, I had to study a lot. But लगे रहो. However, I would also say that low percentile पे भी यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं. So it is possible. सुपर, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, दैट्स मोटिवेटिंग. कुछ अच्छा बोल के जाओ यार, तुम लोग रोल मॉडल हो. नाउ यू गाइस हैव डन इट. सुपर, थैंक यू अनीशा. यू कैन ड्रॉप व्हेनेवर यू फील लाइक. ओके ईशान, यू वांट टू गो नेक्स्ट? अमन, यू वांट टू गो नेक्स्ट? देन वी गोना गो टू द राउंड्स. फटाफट. Cat days are uncertainty, and uncertainty is what you will play around with MBA. So just live that life, and you are gonna end up in a good place. More preparation is equal to more results. And किसी का हो गया होगा बहुत easily, but तुम्हारा नहीं होगा, ये assume करके चलो. तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा efforts डालने, and you have to keep your calm. Just keep doing what you are doing. सर बताएंगे वो करते रहो. लास्ट डे तक हमने वीडियो देखी है सर की. इवन मॉक्स के पहले तक देखी है, मतलब एग्जाम के पहले तक भी देखी है, क्योंकि वो पिछले स्लॉट की डिस्कशन कर रहे होते थे आउटसाइड द. तो करते रहो. यू विल लैंड अप एट अ गुड प्लेस इन योर लाइफ. नॉट अ इशू. Awesome. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, who's next? Aman भैया. For me, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो. मतलब आई एम एन इंजीनियर एंड मेरी सबसे कम परसेंटाइल क्वांट्स में आई है, एंड आई बिलीव कि वो हमेशा अच्छा रहेगा. सो कीप प्रिपेयरिंग. इवन इफ यू थिंक कि तुमने सब कुछ कर लिया, कीप रिविजिटिंग इट. मॉक स्कोर्स बहुत बार ऊपर नीचे होंगे. डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट गेट ओवरजॉयड. जस्ट बी कंसिस्टेंट, फिर तो सब हो ही जाता है. क्या, और ये टॉपर आदमी बोल रहा है डोंट बी कॉन्फिडेंट. कुछ गोल्ड मेडलिस्ट वोल्ड में ना कुछ. यस, मतलब पिछले कॉलेज में. पिछले कॉलेज में. ऑफ कोर्स. सुपर ग्रेट. दैट ये ना, ये IIMs आपको हम्बल करते हैं. ठीक है, तो पहले हर लाइन में अमन भैया का मुंह से गोल्ड मेडलिस्ट निकलता था जब भी मैं इसके साथ बात करता था. एंड दो इज़ अ वेरी वेरी हम्बल गाय, बट IIMs मेक यू हम्बल. यू सी, ओ माई गुडनेस, हर तीसरा बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है भाई यहाँ पे. हर तीसरा बंदा हेड बॉय है, हर तीसरा बंदा अपने साथ स्टड है. राइट अमन सर. आई मीन जितने भी अच्छे जगह जाओगे उतने अच्छे लोग मिलेंगे. यू विल बी हैप्पी टू लिसन टू देम, मतलब उनके साथ रह के. Super. So whenever I see people, I used to ask them these. Like I met Kirtika Reddy, Facebook India CEO. She took my Stanford interview. भाई इतने humble कैसे हैं यार. तो फिर वो हमें भी पता चल रहा है, when you growing up the ladder, all the people whom you meeting are more smarter than you. You cannot be having your chord. So anybody who has a chord, he's not the right place. So nevertheless, okay, good. Okay, Diya Singh, okay, Karthik P, Yash, फटाफट unmute and say one line. Aishwarya, Tane, Vinayak, Vaishnavi. जल्दी यार, कुछ तो बोलो. कोल्ड कॉल करता हूँ मैं. चल, कार्तिक पी. Just go for it. क्या है? Yeah, so I was saying, I think the one thing to do is not to give up at any point. There'll be bad mock scores, there'll be sometimes where you'll not understand the concept very well. It's a strategy based paper. Practice a lot. It doesn't matter if you're not good with one concept, छोड़ दो concept को. Or it's a wide paper. Strategize, give mocks, and you'll be able to do it. सुपर. क्या तेरा कैट पर्सनल क्या आया था गुप्ता जी? 99.9 sir. और तो पेपर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं लोगों को. सही है बेटा, सही जा रहे हो. ब्रिलियंट. कांग्रेट्स मैन, कांग्रेट्स. ऑसम. Who's next? फटाफट. My best section was VARC. So I would say my thinking about VARC and how you should prepare for it is a little different from other people. So like there are two components to it. One is that you should have a high reading speed, and one is that you should have a high comprehension. So for reading speed, I hear a lot of people recommending that you should read like some newspaper or something. I think just read what you want to read. Like this is for people who have a year, who have time
to develop their speed. Read whatever you want to read, like the trashiest novels, romance, Jeffrey Archer, Hunger Games, young adult books. Like once you start liking it and it becomes like Netflix for you, that's when you can do well in Bark. And the second thing is comprehension. So you want to be able to understand what a passage says immediately. So for me, I think I understood it because like I've read a lot of opinion based passages before, and most things in CAT are opinion based, like some sort of argumentation for something. So I would recommend that people look up like Harvard parliamentary debates. Like I think just watch a couple of those, it'll change the way you think. Yeah, that's all. Awesome, thanks Asta. मस्त है, क्यूट बंदी, सारे इंटरव्यूज क्रैक करेगी तू पक्का. ऑल द बेस्ट. ओके, who's next? फटाफट. मल्हार बांगडी वाला, like your name, man. Thank you. So I'll just like to say that you should just trust the process, put in your daily grind, and work to the best of your abilities, and then you're bound to do well. Then, if you can just be true to yourself. Yeah. होता नहीं है ना, जब मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे होते ना, तो होता नहीं है जितना मर्जी. एंड गाइस, शुड आई कीप डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग ऑन यूट्यूब? इज इट मोटिवेटिंग? इज इट हेल्पफुल? लाइक पीपल टेल मी लाइक, यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? शुड आई कीप डूइंग इट? Yes, sir. Yeah, So definitely. it's very good. Like you've been my motivation. Just give me like 30 seconds to share my CAT strategy. So I started last year. I gave CAT also. That time I had 99.4. I got into Cozy Code. I left it. I thought if I did this in 1 month, 3-4 महीने, 5 महीने, 1 साल लगाऊंगा तो ABC हो जाएगा. तो मैंने छोड़ के I continued working, and like your strategy towards the paper, you told me take one section to the moon. So it was through like in my head कि यही best strategy है, मैं कर सकता हूँ. And why I'm recommending कि it's a wide paper, strategize what will work best for you, because my quant is very weak. Like I don't have Ahmedabad and Lucknow calls right now because मेरा sectional नहीं meet हुआ है आपका after 99.9. But I did my best. I took the other 2 sections to the moon, 99.9 plus in those both. So I still have very good calls, and I am very happy with it. Cheers. The risk that I took of thinking कि कैसे मैं better कर सकता हूँ, based on motivation that I got from you, कि पहले call convert करो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है. So I think you are doing great work, sir. Thanks man, thanks. That motivates me to hell, man. Good. तेरा बैंगलोर कन्वर्ट मैं करवाऊंगा. I'll give you my number also towards the end. Good. Okay, who's left? मानसी भट्ट. मानसी, प्रखर बेटी हो गया कि नहीं तू? Okay, Binayak and वैष्णवी. Okay, I'll go. I might sound philosophical, but I would say just enjoy the process, enjoy learning. I come from a finance background. I'm a chartered accountant, and I love learning. So I would just say success के पीछे मत भागो, excellence के पीछे भागो, हो जाएगा. हो जाएगा. Super. Bangalore loves CAs, by the way, huh? They're waiting for you guys. Hopefully it works Cheers. out. All the best. We'll be in touch. Okay, who's left? हाँ Baheti. Yeah, I will go. हाँ Binayak. So I would say that make short goals for a particular day and try to achieve that, and give as much as mocks possible. Just don't give up. You will definitely get a good percentile. Just stick to it. Stick to the process. Awesome. That's the main mantra. Cheers, man. Okay, who's last? Atul, तेरा हो गया ना? Yes, Okay, I'll go next. Yeah, Baheti, go ahead. Yeah, my advice would just be that being confident throughout the entire process, especially towards the end. I think that my CAT strategy last year was really great in terms of studying, and but I was not able to make the sectional in LRDI. This time I scored the highest in LRDI. I got 99.86 percentile in that. Nice. I think that despite studying less this time, I think I was a lot more confident during the exam itself. So I think that is very important as well. That helps. Great. Thanks, man. Thanks. Okay, who's left? Mishra ji, go ahead. Krishna हो गया, वैष्णवी.
Yeah, so I would like to say that consistency is the key. Just don't give up, keep going, and just don't stress out too much. क्या कहना आसान है बेटा, जब हो जाता है ना. Okay, good. I'm Karthik. Miss Kishle Bhardwaj. My Z score is 99.84. I had a 99.42 percentile. I got like a 99.21 percentile. Ashutosh Gupta. My name is Daniel Lad. My name is Jatin Basi. The 98.76 percentile in CAT. So I secured 99.19 percentile in CAT. In which I scored 94.75 percentile. जो भी आप मोटिवेशन देते हो, जो भी आप जिस तरीके से पढ़ाते हो सर, डेफिनेटली कीप दैट गोइंग. ओनली सुमित सर की बातें जो हैं वो ही काम आती है. Their preparation was extremely good. I can proudly say that I am here because of that. Hit the bell icon.